Hello all, in this video we are going to study about plant fibers of Unit 5 or Pharmacognosy, wherein we are going to talk in detail about the two important plant fibers, that is your cotton and jute, and also we'll study about the biological name, their source, their processing, their manufacture, and the uses, and there's some important chemical test. Let's understand what are fibers. Fibers are nothing but the thick elongated cell walls with pointed ends. Cell walls which consist of cellulose and may contain some amount of lignin. ऑलराइट नाउ जो हमारे फाइबर्स होते हैं, यू हैव ऑल सीन कि एक थिक एलोंगेटेड सेल वॉल्स होता है एपिडर्मिस का, प्लांट एपिडर्मिस का, जिसके पास ओके सेल्यूलोज तो पक्का ही होगा, एंड वहाँ पर लिग्निन जो है कुछ कुछ प्लांट फाइबर्स में होता है, कुछ कुछ में लिग्निन इज एब्सेंट, बट सेल्यूलोज जो होता है ये हर फाइबर्स में होता ही है. Okay, let's study about the classification. Fibers can be classified as natural fibers and artificial fibers. Talking about natural fibers have three further classification, that is vegetable fibers, animal fibers and mineral fibers. Now vegetable which we get from plant, क्या क्या मिलता है, कॉटन मिलता है, जूट मिलता है, हेम्प मिलता है, फ्लेक्स मिलता है, एंड वुड सेल्यूलोज. In this video we'll cover about the cotton and jute, and in the second part of this video we'll be covering about the hemp, one mineral, that is asbestos. Okay, so here we are talking about cotton, vegetable natural fibers, which include cotton, jute, hemp, flax and wood cellulose. Okay, in this there will be cellulose present for sure, बट लिग्निन जो होगा वो कुछ में प्रेजेंट होगा, कुछ में नहीं. एनिमल सोर्स में क्या आएगा, वुल एंड सिल्क. वुल दैट इज वी गेट फ्रॉम शीप एंड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म. ठीक है. मिनरल में यू हैव ग्लास एंड एस्बेस्टॉस. द फिल्टर पेपर यू यूज्ड इन योर एक्सपेरिमेंटल pharmacy, all you are using that filter paper is made up of asbestos. That thread which are the threads that are on the filter paper are nothing but the fibers, that is your asbestos. Okay, it is also known as asbestos sheet. Then you have artificial fibers, may regenerated and synthetic. In regenerated you have carbohydrates which contain cellulose, that is rayon, proxylene, viscose, acetate rayons, alignate yarn. Okay, this all fibers you have seen in your clothes, right? Whatever your clothes you are wearing, there is some amount of this synthetic, or you can say carbo cellulose regenerated fibers present. You can see the thread like structure, that are your fibers. Okay, in protein you have fibroline and iridyl. Then in synthetic which is prepared you have nylon and terylene. Okay, I hope you are well aware of this classification to some sort of extent. Okay, let's move ahead. You can see these are few pictures. So cotton, you can see this is cotton, jute, the rassi or the dori that you have at your home. You have seen that very harsh dori that is made of threads, that is of jute. Okay, then you can see coir tree here, flax, you can see how it is. Now this flax plant जो होते हैं इसमें certain fibers होते हैं, so that fibers are removed from this. Okay, you can see hemp, elongated stick like. Okay, then you can see silk, cotton, how it is. Alright, this is the type. Yes, talking about the cotton, you are well aware of cotton, right? It is tissue papers, this is a cotton plant, earbuds, and there are n number of uses of cotton. So let's study about the interesting pharmacognosy of cotton. Cotton जो है उसको हम लोग रॉ कॉटन भी बोलते हैं, प्यूरिफाइड कॉटन भी बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट कॉटन भी बोलते हैं, या सर्जिकल कॉटन. ये जो है ये सारे उसके सिनोनिम्स है, राइट?
रॉ कॉटन, प्योरीफाइड कॉटन, एड्जॉर्बेंट कॉटन और सर्जिकल कॉटन। अब इसका सोर्स क्या है? एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ और हेयर्स of the seeds of the cultivated species of the Gossypium species like Gossypium herbacer and Gossypium barbadens। ओके, अब जो हमारा कॉटन होता है ये एपिडर्मल ट्राइकोम्स होते हैं, हेयर्स होते हैं जो सीड से मिलते हैं, दैट इज योर गॉसिपियम हर्बैकियर एंड गॉसिपियम बारबैडेंस। ठीक है, ये जो है ये ऐसे दो स्पीशीज है गॉसिपियम सीड्स के, जहाँ से हम लोग एपिडर्मल ट्राइकोम्स और हेयर्स लेते हैं, दैट इज नथिंग बट योर कॉटन। ठीक है, उसकी फैमिली है मेलवेशिए। It is a purified or absorbent cotton that consists of trichomes but freed from fatty matter and adhering impurities। Okay, जो भी impurities obviously वो plant से extract किया जाता है, तो जो भी उसकी fatty matter होता है और impurities other होती है, उसको bleach या sterilize करके ही वो market में आता है। ठीक है, what is a geographical source? It is commercially produced in India in large number and also in US and इजिप्ट। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है? रॉ कॉटन होता है, रॉ कॉटन में 90% सेल्यूलोज होता है, 7 से 8% उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वैक्स होता है, फैट होता है एंड रिमेन्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि एज आई सेड सारे फाइबर्स में सेल्यूलोज होता है, तो इसमें 90% होता है, 7 से 8% मॉइस्चर होता है, वैक्स होता है और थोड़े रिमेन्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, नाउ जितना भी प्योरीफाइड एब्जॉर्बेंट कॉटन होगा entirely made up of cellulose, it will always contain 6 to 7% of moisture. Now where are the uses? There are n number of uses, as I said. It is a filtering medium, it is used in surgical dressing, okay, insulating material होता है, and it is an absorbent cotton। क्यों बोला जाता है? Because it absorbs all the blood, mucus, pus, prevents the wound from infection। Okay, that is, you can say, comes under surgical dressing। Okay, there are n number of uses but I have listed few, you can add on to the list। Okay, then what is the storage? The cotton is always to be placed at the cool place, you should not wet the cotton, for you should not wash the cotton or wet the cotton। if you wash or wet it, it's fibers जो होते हैं उसके डैमेज हो जाते हैं and the tissue is of no use। okay, it is a waste, so they should be kept in cool and dry place। बैक्टीरिया, और अगर बहुत टाइम तक वो वेट है तो देर आर चांसेस ऑफ फंगस ग्रोथ, ओके, और बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा दैट मेक्स कॉटन फ्राइबल एंड ब्रिटल, should be wrapped in vapor so as to prevent the dirt and microbial contamination। As I mentioned, heat and long storage makes absorbent cotton less absorbent, so it should be kept in cool or dry place। Next is a jute। As I said, you have seen this kind of ropes present, yeah, you have used this types of ropes, these are nothing but your jute। okay, nowadays they are also used in the beddings। okay, जूट जो होता है, इट इज अ वेरी वेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है जूट की, दैट इज वेरी 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 हाई, और यू कैन से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है, बिकॉज इट इज़ वेरी impossible to pull it or break it from the hand। you will always need certain scissors or instruments, knives or sharp object to cut those ropes। it is not your hands will get cut but the ropes are not broken। okay, so it is that kind of fiber, the fibers are very tensile। it is obtained from the various species of Corycus oleifera and C. capsularis. The family is Tiliaceae। Okay, it is mainly obtained in West Bengal where loamy soil is available with a pH of 6 to 8। ठीक है, तो what is the geographical source? Where is obtained in the West Bengal, जहाँ पर loamy soil होता है with a pH 6 to 8। अब उसके constituents देखो क्या है। अभी कॉटन में लिग्निन नहीं होता है बट इसमें लिग्निन होता है। कॉटन में 90% सेल्यूलोज था, यहाँ पर 53% सेल्यूलोज है, 20% हेमी सेल्यूलोज है
एंड 10% लिग्निन है। ओके रिमेंबर, जूट में 10% लिग्निन होता है। अब इसका कलर ऑल आर अवेयर येलोइश ब्राउन होता है। केमिकल टेस्ट, अब मिडल लेमेला is highly lignified and gives a red color with fluoroglycinol and concentrated HCl. Now, whenever this jute is dipped into or treated with fluoroglycinol, glucinol and concentrated HCl, the color of this jute is changed to red color. Okay, that's why we can see it is of little reddish brown color. Okay, now where was it used? Now you can see various idols. जितने भी idols बनाते हैं, so they put the jute in that clay, so that the it is not able to break, or if either breaks, one or two part is removed out and not the whole idol is broken. So it is and even in the manufacturing of various monuments, jute is used. So manufacture of stupa is jute is used, padding, splints, filtering aid, straining medium, manufacturing of coarse and gunny bags. Okay, you have seen your wheat and your rice bags, gunny bags, that are made up of nothing but jute. Now, what are the chemical tests for identification? Okay, now there are two types of cottons: absorbent cotton, non-absorbent, and we have also studied about jute. So, coaxum एक solution होता है, अगर उसमें we are putting the cotton, it will obviously absorb that solution and swell like a balloon. Okay, and obviously the coaxum solution में जब नॉन अब्जॉर्बेंट सॉल्ट डालेंगे तो क्या होगा, डिजॉल्व होगा स्वेलिंग के साथ. ठीक है, सेम जूट जो है इनसॉल्यूबल है, कॉटन, दोनों टाइप के ये सोल्यूशन में क्या हो जाएंगे. सो वी कैन आइडेंटिफाई द फाइबर्स विद देम. देन 5% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में तीनों भी इनसॉल्यूबल होते हैं. सिमिलरली इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl में तीनों भी इनसॉल्यूबल होते हैं. बट इन द सल्फ्यूरिक एसिड इफ इट इज 80% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो तीनों भी सल्यूबल रहेंगे. बट अगर इट इज 60% सल्फ्यूरिक एसिड, 60% सल्फ्यूरिक एसिड यानी थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, तो तीनों दोनों जो कॉटन है वो इनसॉल्यूबल होगा, बट जूट क्या होगा, सोल्यूबल. सो दिस इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कि अगर कोएक्सिम सोल्यूशन लेंगे तो जूट इनसॉल्यूबल रहेगा, कॉटन के फाइबर्स इजीली आइडेंटिफाई होंगे, बट KOH से कॉन्सेंट्रेटेड HCl से नहीं होंगे बिकॉज तीनों ही इनसॉल्यूबल है. ओके, और H2SO4 अगर 80% ले रहे हैं तो तीनों सॉल्यूबल है, 60% लेके हम लोग जूट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन वी हैव सर्टेन अदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज योर इग्निशन टेस्ट, जिसमें रैपिड बर्निंग होती है विथ फ्लेम टू वाइट इश टू ग्रे ऐश. ठीक है, जो वाइट कॉटन है वो ग्रे ऐश में, या जूट जो है वो ग्रे ऐश में कन्वर्ट हो जाता है. इग्निशन टेस्ट इज नथिंग बट अ ड्राई हीटिंग. ठीक है, मॉलिश टेस्ट में क्या करते हैं, वॉयलेट कलर की रिंग आती है. सो अगेन द सैंपल इज पुट इन मॉलिश टेस्ट. यस, तो वायलेट कलर आता है तीनों में. सो इट इज़ इजीली आइडेंटिफाइड. नाउ N/50 अगर आयोडीन लेंगे और 80% सल्फ्यूरिक एसिड से करें तो जो कॉटन है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा उसका कलर, और जूट का कलर जो है वो ब्राउन से येलो में कन्वर्ट होगा. ओके, फिर फ्लोरोग्लिसरॉल एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एज आई सेड, ये जूट का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जिसमें जूट जो है डीप रेड कलर का हो जाता है. ऑलराइट, और ये लिग्निशन कम कर, लिग्निन जो प्रेजेंट होता है उसका लिग्निफाई करने के लिए यूज़ करते हैं ये टेस्ट. फ्लोरोग्लिसरॉल, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, majority of times ask for jute. Okay, and you have to mention when you are mentioning about the pharmacognosy of jute. Then we have chlor zinc iodine, जिसमें क्या होगा, the absorbent cotton will produce blue color, non-absorbent will give you violet color, and jute will give you yellow color. So here we finish with this. I hope you have understood the pharmacognosy of cotton and jute. Please like and subscribe my channel.